Hello everyone. Yes, welcome to my English lesson. I'm RV and you are watching the Ielts listening test channel. So my today's lesson is very important, extremely important for those students who want to improve their writings, because I'm going to share with you 3 most important tips for writing task 1. So if you have problem with writing task 1, this lesson is for you. So my first important tip, I would say, I would like to share with you, and that is understand your graph, then write your introduction. मीन आपने पहले क्या करना है, you have to understand your graph. मीन पहले उसको समझें कि उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, and then write your introduction. So let me explain a bit. मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा. I mean, don't panic like if you find unfamiliar images. यानी आपकी जो इमेज है, मीन्स आपका जो लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, और it can be like your process or diagram, maybe map. So if you find it unfamiliar, मीन आपने यदि उसको पहले नहीं किया है या complicated लगा, so don't panic please. I mean, don't be get nervous. What you have to do, like spend some time to interpret your data properly. मीन थोड़ा सा आप टाइम लगाएं उस पर, थोड़ी प्लानिंग करें, थोड़ा try to understand, or what you can do, like you can break it down into different parts. मीन जो एक complicated जो information आपको लग रही है, जो data complicated लग रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर लें, उसको पार्ट्स में बना लें, मेक इट सिंपल, मीन उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, और लुक एट द मेन ट्रेंड्स प्लीज. मीन आपने ये नहीं कि मीन गेट नर्वस लाइक व्हेन वी लुक एट द अनफैमिलियर इमेज. तो हमने बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है. हमने क्या करना है, मीन जस्ट मेन ट्रेंड्स को आप फाइंड आउट करें. मेन मे बी इट कैन बी लाइक फ्लक्चुएशन हो सकता है, अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, राइजिंग एंड फॉल हो सकते हैं वो. एंड प्लीज डिस्क्राइब ओनली की फीचर्स. आपके जो है स्टेटमेंट में भी ये मिलेगा कि डिस्क्राइब ओनली की फीचर्स. की फीचर्स मीन इट मीन मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बदलाव हैं, जो चेंजेस आए हैं आपके ग्राफ्स में है या पाई चार्ट में है, सो उन्हीं को हमने डिस्क्राइब करना है. वी डोंट हैव टू गो फॉर एवरी सिंगल एंड unimportant data or unimportant, mean every single information we don't have to write, we don't have to go for it. And then please reword your statement, mean as I told you, then write your introduction. So introduction write करने का मतलब क्या है, mean you have to reword your statement, mean rephrase your statement. Rephrase mean rephrase का मतलब ये है कि आपने जो है मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं करना है, बट डिफरेंट वर्ड यूज करने हैं. मीन यूज डिफरेंट वर्ड बट मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट शुड बी द सेम. वो चेंज बिल्कुल नहीं करना. So that was my first tip, and let's come to my second tip, which is also very important, and that is write clear and effective overview. Yes, I'm saying write clear and effective overview. यानी मैं overview की बात कर रहा हूँ, मैं जो है conclusion की बात नहीं कर रहा हूँ. Don't write conclusion. I think you know what is conclusion. Conclusion means summary of your main ideas. So यहाँ पे अपना कोई परसेप्शन आपने नहीं देना है. आपने मीन यू हैव टू स्टिक टू द इंफॉर्मेशन इन योर स्टेटमेंट. यानी आपकी स्टेटमेंट में जो पूछा गया है उसी पे आपने यू हैव टू स्टिक टू इट, मीन उसी के साथ जो है वो वही आपने जो है वो डिस्क्राइब करनी है. आप अपना परसेप्शन नहीं दे सकते इसमें, और अपने हिसाब से अपना कोई गेस करके या कोई जो है वो इनअप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन या आपके माइंड में कोई आइडियाज आए, सो यू कांट एक्सप्लेन दैट थिंग, मीन यू कांट मेंशन दैट थिंग इन योर writing task 1. Don't go for it please. And don't use numbers please while writing your overviews. मीन आप जब ओवरव्यू लिख रहे हैं तो उसमें हमने जो है वो नंबर्स का बिल्कुल हमने यूज नहीं करना है. ओवरव्यू इसका मतलब यही है कि जो ओवरव्यू का मतलब ये है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस्ट ओवर देयर, कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं, maybe like you can say like the greatest idea, or maybe the greatest change you can say, or the highest change, or the most important change, and then the smallest change. So उसमें जो मेन चीज है वो हमने एक तरह से ओवरव्यू के रूप में उसको लिखना है.
and sorry, and I will also advise you, don't go for fancy but inappropriate word. कई बार जो है students क्या करते हैं, they write complicated word, and they sometimes they don't know what they are writing and whether it is grammatically perfect or not. So if you are going to write that word, you don't know the meaning of that word, there is no use of writing that sort of thing. So don't go for it, please. If you write it inappropriately, you are writing that thing, you are writing complicated word so that you can get desired band score, but उसका जो है वो backfire कर सकता है, उसका जो meaning backfire मतलब यानी आप पे उल्टा असर उसका पड़ सकता है. So please don't go for it. और मेरा जो तीसरा टिप है, which is very very important, extremely important और beneficial would be for, okay, and third most important tips for you, and that is write detailed paragraph effectively, or I would say write effective detailed paragraphs. यानी आपने दो paragraphs आप लिख सकते हैं, one is introduction, second one is overview, write overview, and then go for two effective detailed paragraphs. यानी आपने यहाँ पे जो है detailed paragraph means आपने जो detail देनी है, जो description करना है वो अब यहाँ पे करना है. I mean नंबर वगैरह जो यूज करने हैं, use these numbers effectively over here. मीन कि जो कौन से बड़े चेंजेज आए और कौन से जो स्मॉल चेंजेज हैं और कौन से जो है वो फ्लक्चुएशंस रही हैं, या जो आपको जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डेटा है वो अब डिस्क्राइब आपने यहाँ पे करना है. एंड यू कैन यूज ईयर्स एंड नंबर्स ओवर हियर इन योर पैराग्राफ्स. सो इसमें मैं आपको और कुछ जो है वन मोर एडवाइस लाइक दैट इज मीन यूज एक्यूरेट वोकैबुलरी ओवर हियर. Accurate vocabulary, and you must know, I think, about the combinations of maybe like verb adjective combination, maybe adjective noun combination. For example, like dramatic increase. You cannot say dramatic increasingly. So dramatic increase, dramatic it means adjective, and increase it means noun. So adjective noun combination. And then like the number of students increased significantly. So increased significantly, you cannot write increased significant. Mean verb adverb combinations. Mean whatever the vocabulary you use, वहाँ पे जो vocabulary आपने use करनी है वो must fit in your context. Mean उस context में बिल्कुल सही होनी चाहिए, grammatically जो है perfect होनी चाहिए. I mean it should be grammatically perfect or accurate. और दूसरा वन मोर थिंग जो डिटेल पैराग्राफ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा वो है मीन राइट वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस. I mean you can go for like simple sentences, then complex sentences, and compound sentences, and let me help you like how you can make your sentences complex and compounds. So different kind of sentences, as I told you, mean show your ability, show your competency, show your examiner that you are competent enough, and you can use different type of sentences. It may be, as I told you, simple, complex and compound. और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप जैसे सिंपली मीन जैसे मॉडल का यूज आपको करना चाहिए. यूज मॉडल्स प्लीज. इफ कंडीशनल जो है सेंटेंसेस यू कैन यूज ओवर देयर. कॉन्ट्रास्ट के लिए जो वर्ड है आप जा सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक using of whereas, however, although, meanwhile, very important, you can go for it. And यदि आप इनको यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स होने वाला है. You can go for like before, after, unless, until, when. और यदि आपने सिमिलरिटी शो करनी है तो उसके लिए लाइक सिमिलरली, लाइकवाइज. समटाइम यू कैन यूज द एडवर्ब्स लाइक इंटरेस्टिंगली एंड मे बी सरप्राइजिंगली, so that you can make your writing effective. To make your writing effectively, you can go for that. And finally I would like to say that please before you end your writing task one, you should check some things. I would say 5 important things you should check. Number 1, अपने आप लाइन ये लिख के चेक करें. लिखें आप like I have reworded my introduction. चेक करें whether you have reworded your introduction or not, mean rephrased your introduction or not. Number 2, mean I have described significant changes only, mean I have not described every little change. No, don't go for it. And number 3, mean I have written clear and effective overview. Very nice.
And number 4, I have written, variety of sentences with accurate grammar. Yes. And finally, but most important thing आपने चेक करना है कि I have written 150 words in 20 minutes. Yes. यदि आपने 149 वर्ड भी लिखे, you will be penalized for that. यानी आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा. पनिशमेंट mean you will lower down your score. आपका जो स्कोर जो चाहिए, जो डिजायर्ड स्कोर है वो नहीं मिल पाएगा, ऑटोमेटिकली जो स्कोर है वो कम हो जाएगा. सो बी श्योर यू शुड राइट, यू मस्ट राइट मोर देन 150 वर्ड. यू कैन गो फॉर 160 इवन 180 वर्ड. there is no problem, and take care about you have to finish it in 20 minutes. Don't take more than 20 minutes. और इवन जैसे मैंने पहले बताया था कि अंडरस्टैंड करें, अपना पहला प्लान करके अंडरस्टैंड करें, उस पर भी आप 4-5 मिनट लगा सकते हैं, so that you can write effective task 1. It is also very important. Most of the students take it for granted. वो कहते हैं कि यार ये 1/3 है, यानी इसके मुझे जो है कम मार्क्स मिलने वाले हैं. But it is very important. So don't take it for granted, and please be prepared so that you can get your desired score. It is very, very important. Writing task 1, very, very important, and please practice it, and practice, and you can take our help, like watch our videos. So don't forget to, this I'm going to end my lesson now. So but don't forget to subscribe our channel, share it, like it, comment please, so that we feel motivated and make more and more videos for you, so that you can achieve your target. You can you can acquire the desired score you need, or the eligible score you require to fly abroad. So thank you so much for watching my video, and good luck with your IELTS preparation. Thank you.